नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, welcome to my YouTube channel ashishsirAshish. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa in English and as well as in Hindi, published by Gita Press Gorakhpur. Ayodhyakand Canto 3, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhgwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Before we start this episode, I will tell you a one story from सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। एक गुरु थे, उस गुरु के दो शिष्य थे और गुरु की सेवा करते थे। एक ने दाहिना पैर की सेवा की थी, करता था, और दूसरा बाईने पैर का। एक दिन एक जो दाहिने पैर वाला शिष्य बाजार में कुछ लेने गया था, तो गुरु ने ऐसे थोड़ा हल्का पलट लिया तो दाहिना पैर बाहिने पैर पर गिरा। तो जो शिष्य दाहिने पैर की पूजा करता था, उस पर वो पैर गिरने से उसने डंडा लिया और उसको मार दिया। तो गुरु को तकलीफ़ हुई। फिर वो शिष्य बाजार से आया, उसने पूछा क्या हुआ गुरुजी? तो देखो कि इसने ये सब किया। तो वो कुछ बोला नहीं, पर जब उसको मौका मिला तब दाहिने पैर को पीट दिया। अंत में तकलीफ़ किसको हुई? गुरुजी को। बहुत लोग इकट्ठे हो गए और उनको समझाया कि भाई ये तकलीफ़ तेरे गुरु को हो रही है, ये दाहिने पैर की तू सेवा पूजा कर या बाहिने पैर की, पर तकलीफ़ तो आखिर में गुरु को हो रही है। ऐसे ही ईश्वर जो विश्व रूप है, कोई कृष्णपंथी है, कोई रामपंथी है, कोई ये है, कोई वो है, जो गुरु रूपी ईश्वर की सेवा पूजा कर रहे हैं, पर अंदर अंदर एक दूसरे को काट रहे हैं कि ये ही रास्ता सही है, ये ही रास्ता सही। मैं जिसकी पूजा करता हूँ वो सही है, दूसरा नहीं सही है। तो भगवान तो एक ही है, परब्रह्म परमात्मा, ओमकार स्वरूप। तो उनकी दाहिने पैर की पूजा करो, बाहिने पैर शिव मार्ग अपनाओ, वैष्णव मार्ग अपनाओ, कोई भी मार्ग अपनाओ, आखिर में दर्द तो गुरु को ही होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया कहानी है कि हमें धर्म को किस तरह से देखना चाहिए। एक दूसरे को, हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर एक ही है। इस शंकर भगवान भी ईश्वर है, विष्णु भगवान भी ईश्वर है, ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, राम भगवान भी ईश्वर है, कृष्ण भगवान भी ईश्वर है। तो हमें एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए कि नहीं, ये हमारा पूरा ईश्वर का एक स्वरूप है। तभी हम एक हो सकेंगे सनातन धर्मी, तभी हम ईश्वर की सही पूजा कर सकेंगे। तो आज का एपिसोड नंबर 55 शुरू करते हैं, लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। एपिसोड नंबर 55, अयोध्याकांड कैंटो 3, सर्ग नंबर 3। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तद अनुरूप आदेश देना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राज्यसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हित कर राजनीति की बातें बताना। Canto 3, urged by the emperor to solemnize
the installation of Sri Ram as a prince regent, Vasishtha enjoins in his turn Dasrath minister Sumantra and others to get ready all required requests for the ceremony sent by Sumantra. Sri Ram in the meantime called on his father, who announced his decision to install him as a prince regent, and also tenders some opportune advice to him. Sri Ram's chums break the news to Sri Ram's mother Kausalya, treasuring in his mind the exhortation of his father and bowing low to him. Sri Ram returned to his own apartments. सभासदों ने कमल पुष्प सी आकृति वाली अपनी उज्ज्वली यो को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सब के प्रिय और हितकर वचन बोले। अहो, आप लोगों जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। आंसरिंग द salutations of them all in the form of the hollow of their palms joined together in the shape of the lotus bud and placed on their forehead, the Emperor Dasrath addressed to him the following agreeable and well-meaning reply. Oh, I feel supremely pleased and incomparable is my fortune in that you all desire my eldest and favorite son, Sri Ram, to be installed in the office of Prince Regent, having thus returned the honor done by them, the citizen of Ayodhya and the people hailing from the countryside. The emperor spoke as follows to Vasishtha and Vamdev and other brahmanas within the very hearing of the former, the people of Ayodhya and the countryside. यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का राज्य युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ जी से यह बात कही। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उन सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। द प्रेजेंट इज द स्प्लेंडिड एंड स्कैर्ड मंथ ऑफ चैत्र, roughly corresponding to the March of the Gregorian calendar, when the woodlands are adorned with the blossoms as a mark of rejoicing. Let everything indeed be got ready for the installation of Sri Ram in the office of Prince Regent. महाराज का यह वचन सुनकर मुनि प्रवर वशिष्ठ ने राजा के सामने यह हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालक के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा, तुम लोग स्वर्ण आदि रत्न
देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्प की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी, गाय की पूंछ के बालों से बने हुए दो व्यंजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दीप्यमान सोने के 100 कलश, स्वर्ण से मढ़े हुए सिंगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तु है उन सब को एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो. The emperor's statement having ended, there actually issued forth a loud clamor from men, and that clamor of men having died out by degrees, Dasrath, the ruler of the men, addressed the following word to the sage Vasishtha. A veritable tiger among hermits, as also to Vamdev be placed, O venerable sir, to enjoy all the traditional ceremonies which are required according to the Shastra for the installation of Sri Ram as a prince regent, along with the accessories that will be required for the conducting the ceremonial. Hearing the aforesaid submission of Dasratha, the ruler of the earth, Vasishtha, the foremost of the sages, commanded the minister Sumantra and the others authorized in his behalf, who stood with joined palms in front of the emperor. Please get ready gold and other precious substances, oblations to be offered to the god, as well as all the medicinal herbs essential for the installation ceremony. White flowers and parched grains of paddy, as also honey and ghee kept apart, nay, pieces of bread new, lit, unbeaten, cloth, a chirot, as also all kind of weapons, as well as the army consisting of all its 4 limbs, the horse, elephant, chariots, and infantry. Again, an elephant endowed with the auspicious bodily mark, a pair of each whisks made of a yak tail, and fans both, a flag and a white umbrella, nay, 100 gold pitcher, effulgent as fire, a bull with a gold-plated horn, and a whole lion skin with nail, etc. intact, and everything else, such as sandal paste that may be desirable. Keep all these requisites ready. Next morning or about the royal fire sanctuary. अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाज़ों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहाँ ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले. Let the gates and doorways of the gymnasium as well as of the whole city be decorated with the sandal paste and garlands, as well as with the fumes of incense, ravising the olfactory sense. दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ, और जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो. कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो. साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो. Let excellent and wholesome rice cooked in the milk of curds or curd with many mayfuls of fish for 1,00,000 of Brahmans, as well as the ghee, curd, and parched grains of paddy be served with respect and decantations
monetary gift at the end of the dinner on a liberal scale given to the foremost of the Brahmanas tomorrow morning. कल सूर्यास्त होते ही स्वस्ति वाचन होगा और इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो. As soon as sun rays tomorrow, there will be a swasti vachan as a religious rite preparatory to any religious or solemn observance in which blessings are invoked on the individual to be consecrated for the observance, and let Brahmana be invited for the purpose and seats provided for them. उनके लिए आसनों को तैयार करो. नगर में सब और पताकाएं फहराई जाए तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए. समस्त तालजीवी संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा विभूषित वारांगनाएं नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा डहइयों में पहुंचकर खड़ी रहे. देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्ष के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता है उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए. लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले सूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र भूषण धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करे. सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया. राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न कर दिया. तदंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया है. इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, देखिए अपने मंत्री को भी सखा बोल रहे हैं, हे सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ. तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेश अनुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए. उसे उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिण के भूपाल मलेच्छ आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की उपासना करते हैं. Nay, let bunting be strung everywhere and let the main road be sprinkled with water to prevent dust being raised by the traffic. Again reaching the second enclosure of the king places, the first one being selected for the installation ceremony and therefore exclusively occupied by the Brahmanas. Let the male dancer and the dancing girls beautifully adorned wait there to discharge their duty when asked to do so. Let the image of details deserving worship through flowers and installed in the temple and at a crossroad by worshipped severally and served with cooked rice and other dishes requiring mastication and offered present in the shape of money. 2. Let armed warriors armed with a long sword and wearing glow of the iguana skin and a clean uniform enter the emperor's country yard full of great jubilation, having enjoyed as aforesaid the rites to be performed for the occasion. The two Brahmanas, Vasishtha and Vamdeva, personally did what yet remained to be done. While keeping seated there, after making it known to the king
Of course, approaching with a delighted mind Dasrath, the ruler of the world, Vasishtha and Vamdev, the foremost of the Brahmanas, full of joy in their expression, informed him that everything had been done as enjoined. The glorious emperor then spoke to the Sumantra as follows: Let Ram of disciplined mind be speedily brought by you in my presence. Saying in reply, Amin, Sumantra brought Sri Ram, the foremost of the car warrior, in a chariot under the emperor's order to the council chamber. उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगण के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और बलवान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंदित प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आनंद देते रहते थे। The king, belonging to all the four quarters, viz. East, North, West and South, Malech, non-Aryan as well as Aryans and other living on the verge of a mountain and in the precinct of the forest, who were comfortably seated there on the occasion, all now danced attendance upon the aforesaid Emperor Dasratha, as God wait upon Indra, the ruler of gods, seated in the place in their midst, as Indra in the midst of gods. Dasrath saw coming towards him his eldest son Sri Ram, who viewed with the ruler of Gandharva in complainings of form, etc., whose prowess was widely known in the universe, who was endowed with the unusually long arm and possessed of great might, who walked like an elephant in rout, whose fact was lovelier than the moon, nay, who had a most pleasing aspect, who attracted the eyes and the mind of the man by his comeliness of form, liberality and other virtue, and whose delighted the people even as a cloud delights those scorched by sunshine. आते हुए श्री रामचंद्र जी को और एक टक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे, तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा दशरथ ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और
अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से ही उन्हीं के लिए वहाँ उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्दासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्दासित हो उठता है, जैसे सुंदर वेशभूषा के से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले, हे बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। देखिए, सबसे बढ़िया बात, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसन को सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के से मुख से उसके वृतांत को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। Dasrath, ruler of men, did not feel stated as he saw Ram coming in the befitting manner, helping Sri Ram to alight from his excellent chariots. Sumantra, for his part, followed with the joined palms at his heel, even as he walked into the presence of his father, Emperor Dasrath. In order to see the emperor, the aforesaid Ram, a season of Raghu, the foremost of the men, went up along with Sumantra straight to the well-known place, which looked like a peak of mountain Kailas because of its white color, making his way with joined palm to the presence of his father and falling prostrate. In the Smriti text, it is laid down that calling on one's fathers or teachers every day, one should bow to him laying prostrate on the ground. Dandvat pranabheda bhuma व्युपेत्य गुरु महव्यम। गुरु और पिता को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। The celebrated Sri Ram bowed at the latter's feet, mentioning his own name. Seeing him laying prostrate by his side with joined palm, the king, later ruler of men, took him by his joined palm and throwing him dear, hugged
his beloved son, nay, the emperor offered to the said Sri Ram a splendid and excellent seat, beautifully inlaid with gems and gold, and already kept ready by his servants, mounting the princely seat. Sri Ram, a season of Raghu, illuminate it by his own effulgence. In the same way, by the clear sun would illuminate mountain Meru at dawn, illuminated by him. That assembly too shone brightly on that occasion, even as the autumnal sky, spangled with bright plants and stars, would shine all the more brightly when illuminated by the moon. The emperor rejoiced to see his beloved son, even as one would rejoice to see oneself, decked with ornaments reflected on the surface of a mirror, addressing his aforesaid son comfortably seated. Dasrath, the foremost of those blessed with a son, spoke as follows, even as said Kashyap would address his eldest son. Indra, the ruler of gods, you have been born of my seniormost wife Kausalya, who is worthy of me in every wise, as a son equally worthy of myself, being seniormost in virtue as well. O Ram, you are my favorite son. Since all these people assembled here have been gratified by you through your excellence, therefore accept you the office of Prince Regent tomorrow, when the moon appears in conjunction with the constellation Pushya. You have been adjudged to be evidently rich in excellence by your very deposition. बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताना चाहता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग करो। परोक्ष वृत्ति अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृतांतों का प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार यानी भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रजा प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। To you an epitome of merits as you are, I shall tender friendly advice, my son, as follow, out of sheer affection, resorting to even greater humility than before. Constantly keep your sense under control and eschew vice. The vice born of lust and anger have been separately enumerated as belows. Manusmriti Mrugyaksho divasyapaha parivadaha striyo madaha tairyatrikaham ruthatyam cha kamachojo dasa ko ganaha. Born of concupiscence,
and anger, ruling according both to the indirect, hunting, playing at dice, sleeping by day, slandering others, fondness for women, vanity, love of singing, playing on musical instrument and dancing, and strolling about idly. These are the 10 vice born of lust. देखिए ये सब काम और मोह है, क्या क्या है? पासे से खेलना, जुगार, जुआ नहीं खेलना चाहिए। अभी तो ये 11 और वो 11 सबको जुए में लगा दिया गया है। देन स्लीपिंग बाय डे, सुबह को सोना नहीं चाहिए। स्लैंडरिंग अदर्स, फाउंडनेस फॉर वुमन, स्त्रियों के प्रति खोजबीन करना। वेनिटी, लव ऑफ सिंगिंग, गाने का शौक़ रखना। प्लेइंग ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांसिंग, and strolling about ideally. These are the 10 vices born of lust. Manusmriti 748. Pesunyam sahasam droha irsya suryartha dushanam vagdandayosya parushyam krodhagnichu gunah stakam. Deliberating, violence, vindictiveness, jealousy, conscientiousness, and squandering one patrimony, abusive speech, and cruelty in the punishment are the 8 vice born of anger. क्रोध के कारण क्या क्या उत्पन्न होता है, ये सब क्रोध से जनित है। As ascertaining the condition and loyalty of one's own people and the relative strength and intentions etc. on neighboring state through a network of spies is what has been spoken of here as the indirect method of rule. To make a tour of one's dominance and ascertain things personally, to invite direct petitions from one's subject, hear their grievance and decide their case on their own merit, is what has been designed as the direct method of governance. And direct method of governance place your ministers and others, namely the army commanders and civic guards, as well as all the people, laying by against future contagious numerous stories of useful materials such as jewelry, gold and silver, textile and ornaments, along with beans, burns, and armorials. मंत्री, सेनापति, समस्त अधिकारियों तथा प्रजाकरणों को सदा प्रसन्न रखो। जो राजा कोष्ठागार, भंडारगृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तु को बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करते हैं, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए हे बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सूरदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदित किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सूरदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौवे पुरस्कार भी दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगरवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया
कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। The friends and the allies of a monarch who protects the earth with a fostering care and whose subjects are not only loved by him as his children but are devoted to him, in their turn exult in the same way as the immortals did on securing nectar. डिसाइपलिंग योर माइंड, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखो। डिसाइपलिंग, ये भागवत गीता में भी है कि डिसाइपल योर माइंड विद ध्यान योगा। Therefore, my son, conduct yourself well as instructed by me. Hearing these and hastening to Mother Kausalya, the chums of Sri Ram hastily reported the matter to her, intent as they were on obliging him. The said Kausalya, the foremost of women, bestowed gold as well as cow and jewels to the various kind on those who broke the delightful news to her. Then, bowing to the emperor and mounting the chariot, Sri Ram, a season of Raghu, retired to his splendid place, greeted on this way by multitude of men, immensely delighted to hear the said announcement of the king, even as one would feel on being promised a coveted boon and taking leave of the emperor. The aforesaid citizens to speedily return to their respective dwelling and duly worship the gods in order that Sri Ram's installation may be concluded without any let or hindrance. इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे तृतीय सर्ग। Thus the end of Canto 3 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम,
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય શ્રી રામ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. થેન્ક યુ. જય શ્રી રામ. જય મહારાજ. જય શ્રી રામ.